Students, if I'm audible, please type it out. It's a bit unclear, Ahmad. अच्छा, अब बताओ मुझे. Is it clear now? Huria? अच्छा जी. I'm screen sharing. Can you see my screen? Let me know once you can see my screen. Okay? अच्छा जी. In the previous class, we discussed descriptive writing, and before that, we did narrative writing, right? So basically, अभी हमने almost creative writing का पूरा section cover कर लिया, right? So in today's class, we'll be handling argumentative writing. Now, some may say that argumentative writing is only compulsory for October-November batch. Okay, that is a valid concern, but if you have seen the CIE paper, you see कि जो आपका argumentative essay है, वो creative writing के section से है. But the techniques that you use in argumentative writing are still applicable to the whole paper, right? So you will see when I teach you the paper pattern for May June 2024 series, you will see how all of these techniques actually still apply to that paper, right? I will discuss that in the paper pattern video that I'll be doing, but that I'll be conducting for the May June series. Okay. अच्छा जी. So before any, okay, wait a second. Actually, sorry for disturbance. Sorry, my side say. They are actually guests at my place. Anyways, let's begin with argumentative essay. Okay. So to write a good argumentative essay, we really first of all need to know कि होता क्या है, right? Argumentative essay में we need to pick a side. Basically, we're given a topic where we have to pick one side and argue in favor of the side we chose. So, for example, an argumentative topic would be like you can see over here I've written this: formal education is essential for future success, right? This could be our potential topic. क्या है कि formal education जरूरी है इंसान की future success के लिए. This could be a very this is a potential essay that can come in your CIE. Now, how to deal with such an essay? Basically, you have to choose one side. Either you go in favor of this topic or you go against this topic. Okay? तो आप कौन सी साइड पे जाते हैं बेटा? You should always choose the side on which you can write more points. ठीक है? This is a very valid question which most of us have problems with कि हम कौन सी साइड चूज करें बेटा? जिस पे आप ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, on the side that you can collect more relevant points, वो वाली साइड चूज करें. ठीक है? अच्छा जी. So what does our third bullet point says? Roughly list all the points you can write on in favor of your chosen side. अच्छा. Usually बच्चे एक mistake करते हैं. It's that they start writing before they even know what they will write. ठीक है ना? I always advise everyone, ठीक है, to sketch out exactly what you write. Now, what do I mean by this? आप पेपर का जो ऐसे आप स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट्स या 5 मिनट्स लो जिसमें यू प्लॉट आउट एवरीथिंग दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू राइट. सो for example, if this is my topic, formal education is essential for future success. If this is my topic, what I'll do is I'll think of, okay, मैं इसके favor में क्या लिख सकती हूँ and मैं इसके against में क्या लिख सकती हूँ. Then I'll list all of those points. I will list all of those points and then elaborate and then think कि मैं किस पे ज़्यादा अच्छा लिख सकती हूँ. ठीक है? So for example, I can write more points and more valid points in favor of this argument. So I'll choose the side के मैं इसको favor करती हूँ. ठीक है? और उसमें भी the list that you've made of all your points, उसमें से सबसे ज्यादा जो bold, सबसे ज्यादा जो relevant points है ना, आपने सिर्फ वही चूज करना है. ओके? अच्छा जी. Argumentative essay. Whenever we're writing an argumentative essay, your last point should be a counter argument. Now, what do I mean by this? देखें, usually जब हम argumentative essay बनाते हैं, it consists of I can say 4 to 6 paragraphs, right? 4 to 6 paragraphs. It can vary. अब आपका जो लास्ट पॉइंट होता है, जो लास्ट पॉइंट जिस पर आपने डिबेट करनी है, उस पर आपने सामने वाले की काउंटर आर्गुमेंट पकड़नी.
Now what do I mean by this? So for example, आपने कहा है कि फॉर्मल एजुकेशन एसेंशियल है फ्यूचर सक्सेस के लिए, ठीक है? तो जो बंदा इसके लिए आर्ग्यू कर रहा है वो कहेगा सम में आर्ग्यू दैट फॉर्मल एजुकेशन इज एसेंशियल एट इट गिव्स यू द रिक्वायर्ड स्किल्स. तो फॉर एग्जांपल मैं जो ना मैं कह रही हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए. तो जो मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ ऐसे होगा उसमें मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगी कि जो मेरे खिलाफ जो टीम बोल रही है वो ये कह सकती है कि फॉर्मल एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड स्किल्स देती है, सक्सीड कर देती है. However, I would debate that such skills can also be learned through work experience. So what you do is you pick a point that they can use in their essay, that the other person, that the other argument, that the other side can use in their essay, and you basically twist that on its head. Okay? You basically give a counter argument to that point. Okay? So this is what will give you an edge over all the other writers, right? What will it give you? It will give you an edge. अच्छा जी. So this is a very important point that I always lay emphasis on कि ये तो आपने करना ही करना है कि आपका जो लास्ट पॉइंट है इसमें आपने सामने वाले की काउंटर आर्ग्यूमेंट. ओके. अच्छा. So argumentative writing is basically a form of formal writing. Now this may come as a surprise in creative writing mein, so we are not really limited to the stuff that we have to do in directed writing, right? But this rule actually applies to argumentative writing alone. Creative writing mein you can use informal tone and you have to use informal tone. But when we're discussing argumentative essay, it is basically an exception to that. What is it? It is an exception to that. कि आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमेशा बेटा फॉर्मल राइटिंग को फॉलो करना है, ठीक है? सो बाय दैट आई मीन कि यू कांट यूज कॉन्ट्रैक्शंस. व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शंस हो गए जो हम शॉर्ट फॉर्म में फिर देते वर्ड के. आई वुड को आइड कर देंगे, शुड नॉट को शुडंट कर देंगे. दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. यू हैव टू अवॉइड यूजिंग दिस. ओके. Because if you use these, what it will do, it will give an informal tone that we always have to avoid when we're discussing argumentative essay. Is that clear? If anyone has any questions regarding this whole slide, they can ask me right now and I'll go through them one by one. And if you're fine with it, then we can always move on. Okay, मुझे chat पे लिख के बता दो if anyone has any queries regarding any of these bullet points that I discussed so far. अच्छा जी. Participants given it, 5 participants. All right. Any of you have any queries? Do let me know. Okay then. Let's move on to the next slide. So whenever we're discussing argumentative writing and an argumentative essay, I would advise you to write transition words. अच्छा. Can you see something कि अभी हमने कहा कि contractions ना use करना because एक informal tone आ जाती है if you use them. And अब मैं कह रही हूँ कि transition words जो हैं आप जो है ना वो भी इस्तेमाल करें. अच्छा, transition words क्या होता है? I can explain that as well. I should explain that as well. कि ट्रांजिशन वर्ड्स हो गए आपके मोर ओवर फर्दरमोर जो हम बेसिकली आप अपना जो ऐसे है उसको मूव ऑन करने के लिए लगाते हैं. और अच्छा, वन थिंग, ट्रांजिशन वर्ड्स के बाद हमेशा हमेशा कॉमा आता है. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, मोर ओवर दिस हैपेंड. बेटा मोर ओवर के बाद एक कॉमा लगेगा एंड देन यू राइट योर अदर स्टेटमेंट. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज बी अवेयर ऑफ कि हमेशा ट्रांजिशन वर्ड्स हो गए जैसे फर्दरमोर, मोर, another thing along with this, on the other hand, ठीक है, इनके सबके बाद आपका आएगा कॉमा. ठीक है. इट इज नेसेसरी that you put a comma after transition words वरना आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे लैंग्वेज के. अच्छा. तो व्हाट आई वाज सेइंग के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं इस्तेमाल करनी, ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं. व्हाई? बिकॉज आर्गुमेंटेटिव ऐसे अगेन is sort of like directed writing in a sense कि इन दोनों में informal tone allow नहीं होती, formal tone आपने carry करनी होगी throughout the whole essay. Okay, am I clear on that? अच्छा जी. Next bullet point. Do not repeat everything you've written in your essay to form your conclusion. अच्छा, usually बच्चे क्या करते हैं, उन्हें इतना बड़ा 2 पेज का essay लिख दिया
और फिर वो कंक्लूजन में उस 2 पेज की जो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है ना, वो कंक्लूजन में लिख देता है। तो ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी हमने लिखा, ये वाला पॉइंट भी लिखा, और वो सब समराइज करके कंक्लूजन में लिख देता है। But you have to avoid this. You have to avoid this. Why? Because conclusion में आपने हर चीज रिपीट नहीं करनी होती. Conclusion is basically a reflection of your essay. It should be a reflection of your essay. It should not be repetition, because examiners actually get very annoyed when you repeat everything that you've said. ठीक है ना? So what? How to form a good conclusion? उसमें आपने हमेशा instead अच्छा जी, तो कंक्लूजन में हमेशा आपने रिफ्लेक्शन देनी होगी ना। हाउ कैन वी डू दिस बेटा? जो आपका मेजर पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, एंड आई एम सेइंग कि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा बेटा, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है? नहीं, जरा अजान हो रही है, मैं जरा हम वेट कर लेते थोड़ी देर, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। Let's get back to this class. Before the exam break, what we were discussing was how to form a perfect conclusion. अगर conclusion की बात करें, किस तरीके से we can write a well thought out conclusion. तो basically हमने क्या बात करी कि बेटा repeat नहीं करनी अपनी हर बात को. Instead आपका conclusion should be a reflection of what you've written so far. Now how? What do you mean कि reflection होना चाहिए? What do you mean कि ये इस तरह से आपने repeat किया? बेसिकली जो आपकी मेन बात थी, पूरे ऐसे की मेन बात थी, विच वॉज के भाई फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो लोग होम स्कूलिंग भी करते हैं, people there are various sort of education that are available, ठीक है ना? तो we can say हमारा जो मेजर जो पॉइंट है, हम बस वो लिखेंगे, ठीक है? कि this is because आप लिख दें कि as my essay shows, this is why formal education isn't necessary, ठीक है? एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, एक शॉर्ट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए हर चीज. अच्छा, लोग के ना कंक्लूजन आप देखें, दो दो इतने बड़े बड़े कंक्लूजन, 10 lines के, बेटा नो. Your conclusion should only be of like 4 to 5 lines, and that is enough. Okay, that is enough. ये conclusion वाली बात समझ आई थी? अच्छा जी. अच्छा, before we go and discuss an exemplary essay, I would like to just review all and everything that we've discussed so far. ठीक है? अगर हम देखें आर्गुमेंटेटिव ऐसे की हम बात करें, तो सबसे पहले भी डिस्कस कि हमें एक साइड पकड़नी होती है एंड उस पर हमने लिखना होता है विच साइड टू चूज, बेटा जिस पर आप रेलेवेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? So either you go in favor of the topic or you go against it. Okay, then what I suggest you is to create a rough list of all the things that you will say in favor or in against, and then decide which side you choose. ठीक है ना? और फिर उन लिस्ट में से भी आपने सारे पॉइंट्स पे नहीं लिखना ऐसे, ओनली द वंस दैट यू थिंक आर रेलेवेंट एंड यू थिंक आर द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, उनको चूज करके लिखना है, ठीक है? अगर आपके पास 10 आइडियाज हैं इन फेवर्स, उसमें से आप सिर्फ 5 पकड़ेंगे और उन पे इलैबोरेट करेंगे ऑन विद ईच पैराग्राफ, ठीक है? अच्छा, योर लास्ट पॉइंट शुड बी अ काउंटर आर्गुमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मल एजुकेशन का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो कहेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी होती है बिकॉज इट गिव्स देम अ रिक्वायर्ड स्किल, तो मैं उसके काउंटर आर्गुमेंट में कह सकती हूँ एक्सपीरियंस आल्सो गिव्स यू द सेम रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है ना? सो दिस इज अ काउंटर आर्गुमेंट. फिर नेक्स्ट वी डिस्कस की कॉन्ट्रैक्शंस लाइक शुडंट, कुडंट, वुडंट, आइड, ये नहीं यूज करनी, कांट, ठीक है? यू डू नॉट हैव टू यूज दिस एज द गिवन इंफॉर्मेशन. इसके अलावा भी डिस्कस के ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक फर्दर, मोर, मोर ओवर, ठीक है? बिसाइड्स दिस, अलोंगसाइड दिस, ये यूज करें बिकॉज इट गिव्स इट फर्स्टली gives your essay a formal tone and it also looks good, ठीक है? खासतौर पे when we're doing आपका argumentative essay, narrative writing and descriptive writing में you don't have to use this, okay? This only applies to directed writing and this only applies to argumentative essay. एंड लास्टली भी डिस्कस के कंक्लूजन में हर एक बात अपने डिटेल में नहीं लिखनी, सिर्फ मेजर जो आपका कॉन्सेप्ट है यू हैव टू राइट दैट. अच्छा, नाउ वी मूव ऑन एंड डिस्कस एन एसे, ठीक है? एन एग्जांपल ऑफ दिस एसे, ठीक है ना? आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैंने ये तो लिख दिया कि किस तरीके से लिखते हैं.
अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लिखा हुआ, ठीक है ना, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरी स्क्रीन है जो मैंने शेयर करी है जिसमें ये आपकी इमेज क्लियर आ रही है पूरी, मुझे चार्ट में लिख के बताएं ताकि फिर मैं ये पढ़ के सुनाऊंगी ना आपको। So please let me know if you can basically see this image clearly or else I'll zoom. मुझे चैट में ना टाइप आउट कर दो प्लीज। Please बेटा type it out in chat if you can see this screen. Okay, it is clearly visible. All right, Emma, thank you for the feedback. We can now continue. अच्छा ठीक है। तो आपका जो argumentative essay का टॉपिक है, it says young people should obey their elders without a question. What is your view? कि क्या youngsters को अपने माँ बाप की बात without any question माननी नहीं चाहिए? अच्छा नाउ वी विल, हमारी बायस हमारे साथ होनी चाहिए हमारे ऐसे पे, पर उसका नहीं पढ़ना चाहिए, राइट? दिस इज जस्ट एन ऐसे दैट आई एम शेयरिंग राइट नाउ, ओके। अच्छा जी, तो फर्स्टली हमारा आना चाहिए इंट्रोडक्शन। लाइक आई सेड आपकी 4 to 5 लाइन्स का मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6, इससे ज्यादा प्लीज इसे जितना लंबा नहीं करना, ज्यादा लेंथी नहीं करना, बिकॉज देन इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ पैराग्राफ दैट बिलोंग्स टू द बॉडी एंड नॉट एन इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, so what have I written over here? I've written in many societies, obeying your elders without question is seen as a portrayal of respect and therefore is an integral part of their culture. ठीक है ना? अभी नो के सोसाइटीज में, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में, खासतौर पे एशियन सोसाइटीज में जो है बड़ों की बात मानना इज हाईली, यू नो, इट्स एक्चुअली वन ऑफ आवर वैल्यूज, है ना? So Asian culture particularly is an example of this. It is equally, acha, while I believe respecting your elders is a great value to have, it is equally important to have the ability to make your own decisions independently. So stop. See, ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है इतना बड़ा, इसमें हमारे पास एक चीज वाजे हो गई कि व्हाट साइड है माई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। किससे क्लियर हुआ? ये वाली लाइन से क्लियर हुआ। तो ये ऐसे में बंदा कौन सी साइड पिक कर रहा है कि हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आई बिलीव रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज अ ग्रेट वैल्यू टू हैव। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं बंदा कि रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, एल्डर्स की बात मानना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट वैल्यू टू हैव, बट आई थिंक, बट ये जो बंदा है, आई एम रीडिंग दिस आउट एज द नरेटर, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, बट आई थिंक दैट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू मेक योर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, कि हमें अपने डिसीजंस लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, कैन यू सी दिस? मैंने लिखा है फर्स्टली एंड देन देयर इज अ कॉमा, दिस इज द थिंग दैट पीपल यू नो ओमिट एंड फिर इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपने फर्स्टली लिखा, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, ओके। फर्स्टली, obeying your elders orders is not always the right thing to do। अच्छा, ये अपना फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं। Many times, higher authorities use their power to force you into wrong circumstances। अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा था I'd, so I'd is a contraction that we have to avoid, और मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है I would argue that not every elder deserves our obedience। Often elders are irresponsible people। For example, it is better to not obey alcoholic parents। Like अब देखेंगे क्या ला रहे हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, एग्जाम्पल ला रहे हैं। So you can also use examples in your argumentative essay। Alcoholic parents, then to devote yourself, devote का क्या मतलब होता है कि आंखें बंद करके फॉलो करना किसी चीज को, ठीक है, तो devote yourself into serving them। If an elderly person asks you to do an act which may cause harm to you, comma, it may always, you may always disregard such an order। Being more aged doesn't give elders the right to command your life। अच्छा, तो इन्होंने अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा और इस तरीके से प्रेजेंट किया, यू कैन सी इट हियर, ओके। अच्छा, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, तो कोई वर्ड की मीनिंग नहीं समझ आ रही, कोई भी वो हो, कंसर्न हो, प्लीज मुझे चैट पे लिख देना, आई विल रिजॉल्व दैट राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, अगेन देखो, सेकेंडली और फिर उसके बाद कॉमा, आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन दिस कि बच्चे कॉमा इतने यूजुअली इतने आराम से ऑमिट करते हैं ना कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं वो। अच्छा, again, I firmly believe, again, this is a term that you can use, Kali, I believe me, I firmly believe it, sounds that the person is actually very passionate about what they're saying and it's very serious about what they're saying, that questioning is a vital part, vital means important, is a vital part of learning। If youngsters are not allowed to question their elders, how will they learn the purpose of doing what they are asked to do? अच्छा, तो second point ये क्या रेस कर रहे हैं कि अगर हम किसी चीज का क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम
किस तरीके से सीखेंगे? तो यूजुअली आपने देखा होगा हमारे एल्डर्स जो है ना हमसे हर चीज डिस्कस करे करते हैं, अपनी मर्जी से वैसे भी कोई कुछ नहीं करता, बिकॉज बच्चों को तो आदत ही होती है कि वो पूछ पूछ के सीखता है। तो जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं तो बेसिकली डिस्कस एवरीथिंग विद देम। फर्दरमोर देखो फिर से कहा, फॉलोइंग एल्डर्स advice may result in youngsters to be heavily dependent upon them. This will complicate their transition into adulthood. अच्छा, तो थर्ड पॉइंट they're raising is कि adulthood में आप में डिसीजन खुद लेने होते हैं तो फिर वो ट्रांजिशन उनको करने में मुश्किल होगी. This is a good point that they raised. Devoting yourself into obeying higher authorities consequently may lead to the inability of saying no to things causing a person harm and may also lower their self-esteem. So this is why जो है ये क्या अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं कि इस तरह के बेटा यू हैव टू थिंक ऑफ बोल्ड पॉइंट्स, इवन दो आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस, बट इन्होंने बोल्ड पॉइंट्स उठाए राइट ऑफ सेइंग. तो वो कह रहे हैं कि बंदे के अंदर नो बोलने की एबिलिटी खत्म हो जाती है राइट. सो दिस इज अ गुड पॉइंट दैट दे रेज्ड. ऑन दी अदर परस्पेक्टिव, अच्छा यू रिमेम्बर आई सेड कि आपका जो लास्ट पॉइंट होगा वो इन डिसएग्रीमेंट होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा राइट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, डिडंट आई सेड कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो सामने वाले के आर्गुमेंट आप पकड़ के उसे गलत प्रूफ करते हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग. वो कह रहे हैं ऑन द अदर पर्सपेक्टिव कि द अदर पर्सन विल आर्ग्यू. One may argue that youngsters should offer their obedience to elders as they are more experienced than them. है ना, सामने वाला तो यही लिखेगा ना, जो कह रहा होगा कि हमें अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए, वो तो यही बोलेगा ना कि हमारे एल्डर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है. नाउ अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये उस पॉइंट को लेके यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनका ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं है. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, while arguing this, I think it is necessary to notice that making mistakes is a great way to learn. If elders always impose their experience upon youngsters, how will they have their own experiences? I believe elders should allow young people to line their own experience so they learn through them. अच्छा, one thing I have noticed is कि बेसिकली उन्होंने एक ही चीज बार बार रिपीट किया, दिस इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड. क्या कह रहे हैं वो कि एक्सपीरियंस और मिस्टेक से ही लर्न करता है बंदा, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली अवॉइड. ठीक है, बार बार एक चीज को रिपीट ना करें. अच्छा, अगेन आप ये देखेंगे ना कंक्लूजन कितना छोटा सा है. इट्स व्हाट 1 2 3 3 लाइंस बेसिकली. ये तो छोटा सा उन्होंने एक वर्ड लिख दिया. 3 लाइंस में इन्होंने अपना कंक्लूजन सम अप किया. यानी कंक्लूजन अपना 3 लाइंस में सम अप किया है. बैठ के 5 5 6 6 लाइन नहीं लिखी जिसमें वो हर चीज को रिपीट करे. बेसिकली योर एसे शुड बी योर कंक्लूजन शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर होल एसे. तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, आई थिंक यंग पीपल शुड line their life live their life according to what they think is best for them instead of blindly following the others without question solely due to their age gap. ठीक है, तो इन्होंने बस अपनी मेन जो टॉपिक था अपनी बात का, उनकी जो बेसिक सीन तमाम पैराग्राफ लिखने की, उन्होंने वो इन 3 लाइंस में सम अप कर दी है. Am I clear on that? अच्छा जी, this was an exemplary essay that we discussed. If anyone has any concerns, कोई word नहीं समझ आया, कोई point bullet point नहीं समझ आया, I can give you this whole lecture again. Seriously, I can. Just tell me and we can discuss it right now. ठीक है, because अभी जो हमारा ये session होता है, मैं end में उसमें, if you're new here, we basically do a question answer session after each lecture. अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूँ और अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, then you can ask any questions that you have in mind.